ये प्रॉब्लम है, सपोज लाइक लिमिट इज गिवन लाइक दिस फॉर 0 to 1. Suppose two questions are there for 0 to. Suppose there is 1 minus x square and there is suppose 1 minus x square minus y square. And there is dx and dy. Some question is like this and another question like for this 0 to 1, 0 to 1 minus x square, 0 to suppose 1 minus x square y square. So here like this 1 minus x square minus y. So these are two type of question. One is like this 0 to 1, 0 to 1 minus x square, and second is this. Okay? Now how you know that which is of polar coordinate and which is of spherical polar coordinate? There are total three type of variable. One is polar coordinates, second is spherical polar, third is cylindrical. Cylindrical, we minimum use of cylindrical. Okay? So whenever there is you see x square plus y square in two dimensional, whenever you see x square plus y square, so then go for polar coordinates only. Then apply only polar coordinates. Polar coordinate mean x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. If you see like term this x square plus y square plus z square, sphere. If you see sphere, circle matlab polar, sphere. If you see this is a sphere, then go for spherical polar coordinates. Okay? Then go for only spherical polar coordinates, and there is no need for the cylindrical is very limiting use of cylindrical. There is only hardly one or two question of cylindrical coordinates. Cylindrical coordinate mostly नहीं use होता, clear है? Mostly we use these polar coordinate and spherical polar coordinates. ठीक ठीक है पारसप्रीत? Yes, sir. एक और क्वेश्चन पूछा है, सपोज otherwise volume formula is triple integration. This is a formula for volume dx, dy and dz. This is a formula for volume, but sometimes there is question is find volume by double integral. Find volume by double integration. Find volume by double integration. Suppose like this. Okay? So then formula of volume become double integral method. We can use only two integration. Then here is z, dx and dy. Okay? So we find the value of z in term of x and y. Find the value of z in term of x and y. Then this all question converted into x and y. So we find the limit of z in term of x and y. So that's why. So this is the volume by double integral. No any problem. No cylinder. वैसे this is circle. This is a circle. X square plus y square equal to ay. I show this. This is x square plus y square equal to ay. So if we put x equal to r cos theta, वैसे ऐसे देख लेते हैं, put x equal to r cos theta. Simple method से बता रहा हूँ, put x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. Suppose we see by this r sin theta. So x square plus y square is r square equal to a r sin theta. Suppose r is cancel out. So वैसे भी करोगे, this is r equal to a sin theta. R equal to a sin theta. So which circle is this? याद आया थोड़ा सा? R equal to a sin theta. It means this is vertical
circle. So any circle in three now if we draw this diagram, so ये ऐसी बनेगी 3 dimension में like this, कोई ऐसी 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 बनेगी यहाँ पे बन जाएगी like this cylinder, ठीक है, at y axis. So this is circle in 2 dimensional, so it becomes cylinder in 3 dimensional. So this is given equation of cylinder only, ठीक है. So this is मैंने रफ सा बताया है. So by completing square we can also prove this is circle. I solve it with the help of changing into polar coordinate. This is the equation of circle r equal to a sin theta. Okay? So this is the equation of circle, and equation of circle in 3 dimensional is cylinder. Okay? So one sphere is given and one cylinder rough. It is vertical cylinder. If x square plus y square equal to ax is given, then this is horizontal cylinder. Okay? But this is vertical cylinder is given like this. So we want to find the common area. So we find with the help of double integration. What is the formula for double integration? Double integration z dy by dx. In this case, this cylinder is only on this plane. It carry only 2 planes, so it is only four. It takes parts of only x-axis and y-axis. 2 part for x and 2 part for y. So ये z में नहीं आ रहा, देखो सीधी इस साइड नहीं आ रहा इसका पोर्शन, कॉमन पोर्शन जो इन्होंने कट किया है. This portion is only in x-axis, above x-axis, y-axis, and this is not in the z-axis. So there are only 4 octants. So this area cut in only 4 octants. So we find the formula, find the volume for first octant, and then multiply it by 4. So this is the formula 4 into z dy by dx. So from here we find the value of z, that is a square minus x square minus y square. And now first quadrant, in first quadrant, now this is, we see there is x square minus y square, so we convert this into polar coordinates. So in the first quadrant, theta is vary from 0 to pi by 2, and r from here, what is how to find this value, r value, because x square plus x r, just I find r equal to a sin theta. So this is the limit a sin theta, and simple solve this. This somewhat difficult question hai. You problem is there, you cannot see 3 dimensional cutting in 2 dimensional. We are drawing 3 dimensional in 2 dimensional, so that's why you are seeing the problem. So but यहाँ से clear ही है कि it contain only xy plane because it made on the z axis. So that's why there is 4 only, because ये लिखा हुआ है. The required volume is part of the sphere within the cylinder due to symmetry of the sphere. Half of the lines in the first quadrant and half line in the second quadrant in the xy plane only. It matlab it cover the portion on 4 octants only, not all the octants. ठीक है? So that's why. हाँ जी, और बताओ. सर. क्लियर लिमिट हेलो थोड़ा सा सर. डिफिकल्ट है बट नो प्रॉब्लम. हाँ जी. हेलो सर, ये चेंज ऑफ वेरिएबल में सर आपने एक पैरेललोग्राम का एक क्वेश्चन करवाया था. हाँ जी. हाँ, तो उसमें सर ये जैकोबियंस की वैल्यू 1/3 कैसे आ गई थी सर, वो बता दीजिए. जैकोबियन की वैल्यू 1/3 कैसे आएगी, ठीक है. सो देयर आर 2 मेथड. अगर थोड़ा सा याद हो आपको, u is given x plus y. I think u is given x plus y. ठीक है, u is given x plus y and v is given I think x minus 2y. So this is the value of v, x minus 2y. ठीक है. So from here we find the value of x and y. So first multiply it by 2. Suppose I multiply it by 2. Suppose I multiply it by 2. So it become 2u equal to 2x plus 2y. And this is v equal to x minus 2y. First add these two terms. When we add, this become 2u plus v. When we add this equal to this 2y cancel, so this is 3x. Okay? So from here we find the value of x, that is 1/3 2u
plus v. If you have problem with writing this, you can also write like this. X है 1/3 multiply कर दो 2/3 u plus 1/3 v. So this is the value of your x. ठीक है. Similarly, now if I subtract this minus now multiply, now simple subtract these two terms. Not this. Simple subtract these. When we subtract this is minus, this is plus. So here this is cancel out. So this become u minus v. U minus v equal to, this is y plus 2y is 3y. ठीक है. So y value is 1/3 u minus v. So y we can write u by 3 minus v by 3. Now what is the formula for Jacobian now? What is the formula? We want to find Jacobian of, we are changing xy into u and v. This is the formula. We want to calculate this. Okay? So what is the formula? First curly x by curly u and curly u x by curly x by curly v curly v curly y by curly u and curly y by curly v. So now differentiation of x with respect to u. This is x. When we differentiation with respect to u, so we get 2/3. So this is 2/3. X की with respect to v. When we differentiate x with respect to v, this is 0, v की 1. So what is left? 1/3. Now y with respect to u. This is y. Y with respect to u is 1/3. And y with respect to v is minus 1/3. So we multiply this and this. What we get? क्या करेंगे? 2/3 minus कितना आएगा भाई? This is minus 2/9 and minus, when we reverse it, this is minus 1/9. So this is by taking minus 3/9. So this is minus 1/3. So this is a value of Jacob. But we take mod Jacobian. So Jacobian magnitude, when we take magnitude, so it become 1/d. Clear है? yes sir. Now, any other problem? Try to solve this question. ये लगता ही simple है. जब आप ट्राई करोगे आपको खुद को पता चल जाएगा. Try to solve the calculation only. First step is find the limits, and after finding the limit, try to solve the calculation of integration. Integration calculation is very very. हाँ जी. इसमें वैल्यू जैकोबियन की r नहीं आएगी, r d थीटा x से x को y की वैल्यू पे. यार क्या पूछते हो? So now in that is case when we put x equal to r cos theta, then when we change into polar coordinate, when we put x equal to r cos theta and y equal to r sin theta, this is completely different than this. In this case we change x and y into u and b. There is no matching in these two questions. If this is different question, this is in this case the value of Jacobian is r when we change into polar coordinate. In that case value is r, otherwise it depends upon the question. और बोलो. चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको ट्राई करो. ट्राई टू फाइंड द लिमिट ऑफ दैट क्वेश्चन. हाँ जी सर आपने चेंज द स्फीयर इनटू पोलर कोऑर्डिनेट करवाया था ना? हाँ जी.
सर उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बोलो बेटा कौन सा है? प्रूव दैट वाला। हाँ जी हाँ जी। सर उसमें लिमिट्स नहीं पता लग रही। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलोगे? ऐसे तो पता नहीं ना मेरे पास, किस नोट्स में है वो? नोट्स के अंदर है किसी के? नोट्स के अंदर हाँ है? जी सर, नोट्स में है। नोट्स में कहाँ का है बताओ, उसके आसपास सर वाला। क्वेश्चन है, हाँ जी क्वेश्चन बोलो। सर प्रूव दैट हम्म, आगे। वन इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन हम्म, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कौन है इसके, इसके नीचे इसके। बाय ए स्क्वायर हम्म, माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। नहीं अच्छा ये ऐसे होगा, ऐसे होगा ये, ऐसे होगा 1 माइनस एक्स, दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर। हाँ जी। हाँ जी सर। माइनस, आगे ये भी है, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी। और अंडरवुड है ऊपर, हाँ जी सर। अंडरवुड है ऊपर कि नहीं? हाँ जी सर है। तो यहाँ डी एक्स डी वाई डी जेड होगा, है ना? हाँ जी। ऐसा ही है सेम। हाँ जी सर। कुछ आगे दिया होगा साथ में वी वॉल्यूम वगैरह, या यहाँ लिमिट दी होगी, कुछ दिया नहीं आगे वी, वी ऐसे दिया दिया, हुआ है सर, एक्स दिया हुआ है। दिया होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही दिया है। दिया हुआ ये ऐसे, तो यही तो मैंने ऐसे नहीं डिस्कस दिया हुआ, है। ऐसे नहीं दिया हुआ सर। क्या दिया हुआ? सर लिखा है वी वेयर वी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड हाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वही एक स्क्वायर ही बात, अपॉन बी वही स्क्वायर। वही बात है, एक ही बात। इसका मतलब v is a, हाँ जी सर। that means v is a function of three variable x y z and this is equation is given। तो यही मैंने बताया था। यस तो सर। फर्स्ट दिस इज in this is very important question in which two time we apply two time change of variable, two times change of variable। ठीक है, पहले टू टाइम चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे इसमें, टू टाइम चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था। तो फर्स्ट वही पुट करेंगे, वही चेंज x बाय ए इक्वल टू क्या पुट करेंगे x, ठीक है, y बाय बी, पूरा ध्यान से देख रहे हैं, इसको क्या पुट करेंगे y, कैपिटल Y, ठीक है, और z बाय सी को क्या पुट करेंगे, कैपिटल Z। तो फर्स्ट वी चेंज स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z टू कैपिटल x कैपिटल y z, तो ये सारा कैपिटल x कैपिटल y z में बन जाएगा, ठीक है। then we change into spherical polar coordinate, then we change into spherical polar coordinate। वो आपको याद होने चाहिए क्या आ गया। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, मैंने काफ़ी देर लगा के समझाया था। तो इन दिस केस, सो दिस इज एलिप्सॉइड इज गिवन, एलिप्सॉइड, एलिप्स होती है ना, कितनी एलिप्स होती है, दिस इज एलिप्स। if we add one more term z square by c square equal to 1, this then it become ellipsoid। so whenever the question of ellipsoid came in the question, so you want, आपको क्लियर होना चाहिए। so then we apply two time change of variable, one convert into sphere। पहले एलिप्स ये लिख लो थोड़ा सा, एलिप्सॉइड को, एलिप्सॉइड एलिप्सॉइड को हम किस में चेंज करते हैं, पहले स्फेयर, स्फेयर में चेंज करेंगे बाय पुटिंग दिस। अब देखो x बाय ए को x पर दिया, x बाय ए को x पर दिया, ये बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस क्या बन जाएगा, वाई स्क्र प्लस प्लस जेड स्क्र इक्वल टू, तो ये बन जाएगा। देन वी कन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। और किसी ने कुछ पूछना हो? सर मेरा एक क्वेश्चन, हाँ जी।
ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ 5 ਪਾਈ a raised to power over 64। ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। 3-4 ਵਾਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। क्वेश्चन कौन सा है बोलो? ट्रिपल इंटेग्रल r dz dr d theta dz dr d theta लिमिट की जदी 0 to a square r square। माइनस आर स्क्वायर होनी, नहीं मल्टीप्लाई च मल्टीप्लाई च नहीं होंदी। मल्टीप्लाई च लिखा है स्टेटमेंट a एक मिनट square r square। देखदा एक मिनट। सेकंड क्या है? सेकंड नहीं, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है बेटा, बेस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तभी गलत आता होगा। ठीक है, सेकंड है 0 to a sin थीटा। 0 to पाई बाय 2। हाँ, यहाँ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, यही गलत कर रहे हो आप। ठीक है, दोबारा करना कैलकुलेट। क्लियर है? यस। ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सिंपल ही है। फर्स्ट वो इंटीग्रेट रिस्पेक्ट टू जेड करना है। करीब एक सेकंड ही लगना है इसको करते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड ये कुछ नहीं है, जेड तो पाई बाय 2 वैसे रहना है। ठीक है, तो ये भी वैसे रहनी है, 0 to a माइनस साइन थीटा भी वैसे रहनी है। सो वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वी वांट टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू जेड। सो देयर इज नो जेड इज गिवन, सो ये आ जाएगा आर जेड। जेड की लिमिट कितनी आ जाएगी? 0 a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी आर एंड डी थीटा। बहुत सिंपल है ये तो। अपर माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये आ जाएगा आर इंटू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दूसरी 0 हो जाएगी। बस अब इसकी आर को अंदर मल्टीप्लाई करके सिंपल सी इंटीग्रेशन इसको कर देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा वेरी सिंपल। ठीक है, एट लास्ट वी अप्लाई रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, देन नाउ वी मल्टीप्लाई बाय आर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर आर, फिर उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, देन वी अप्लाई इंडक्शन फार्मूला। और कोई क्वेश्चन हो? अब मैंने एक क्वेश्चन लिखूंगा, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपने देखना है कि कैन वी कन्वर्ट इनटू दैट इनटू किस में कन्वर्ट होएगा, किस वेरिएबल में कन्वर्ट होगा, पोलर में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, वो चेक करना है। ठीक है, so this is the question. Triple integration is given. So there is x y z dx dy dz, so there is over the region, suppose over the region is given x plus y plus z equal to 3 and coordinates plane, suppose. So this is a question. Now किस में कन्वर्ट होगा? ये पोलर में कन्वर्ट होगा, सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट होगा, और इट कन्वर्ट इनटू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। हाँ जी, कौन बताएगा? सो दिस इज अ क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए। सो नाउ कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट होगा ये? एनीवन? So this is a question, x y z dx dy say over the region x plus y z and coordinates plane. So we can convert into which variables? चेंज ऑफ वेरिएबल किस में कन्वर्ट होगा ये? सर स्फेरिकल में होगा। हाँ जी ठीक। और हाँ जी अर्शदीप सिंह। यस सर। सर सिलिंड्रिकल में नहीं हो सकता? हाँ जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और अब तो किया। हाँ जी किरण बोलो, मेन कैंपस।
माइक ऑन करना है। चलो कोई बात नहीं। तो देखो बेटा ध्यान से देखो, दिस इज प्रॉब्लम, ये दिस इज स्क्रैमिंग। मैंने बोला था कि व्हेन वी चेंज इनटू एनी वेरिएबल, we change variable only when there is x square plus y square term is given. Any circle is given. If circle is given, then we change into polar coordinates. Okay. When sphere is given, then we change into spherical polar coordinates. But here is what is given this. What is this? Anyone? What is this? X plus y. This is tetrahedron. This is a tetrahedron. We divide this x by 3. सो यही चीज आपको प्रॉब्लम करेगी. यू थिंक change of variable is very simple, we can apply everywhere. No, you cannot apply everywhere. This is the simplest question. We find the limit of z in term of x and y, then find the limit of y, then limit of x. So यही प्रॉब्लम होती है. बच्चे को लगता है कि चेंज ऑफ वेरिएबल इज वेरी सिंपल, वी कैन अप्लाई एवरीवेयर. बट यही ध्यान रखना है कि whenever circle is given, circle is given, limit is given in term of circle, or yeah, there is x k plus y. If circle is given, then only change into polar coordinates. Clear? And when a sphere is given, what is the sphere? X square plus y square plus z square equal to a square, then we convert into spherical polar coordinate. ठीक है, ये याद रखना. तो जिन्होंने बोला था वो बिल्कुल गलत था. तो इन चीजों, छोटी छोटी चीजों को याद रखो, बड़ा बड़ा करके लिख लो. Whenever there is area is in the circle or limits in the term of circle, then we only can change into polar coordinate. And in similarly in case of sphere, we change into spherical polar coordinate. Otherwise, not possible. So every time we change into any variable. Okay? So there is hardly 1 or 2 question of cylindrical coordinates. ये समझो कि cylindrical coordinate मैंने आपको करवाया ही नहीं, because I did not discuss any question of cylindrical coordinate. ठीक है? So there is major two, only two spherical polar coordinate. ठीक है?